Hi everyone, I'm Dr. Anshuman Pancholi and let's revise another important topic for INI-CET, that is medullary thyroid carcinoma. So we'll basically be revising some important pointers for thyroid carcinoma and then we'll be jumping over to medullary thyroid carcinoma. Alright, so let's first start with the classification of thyroid cancer. So we know that majority of the thyroid cancers originate from the follicular cells. So we divide the thyroid cancers into benign and malignant. Benign we obviously know is your follicular adenoma. In the malignant ones we talk about the primary and the secondary ones. In primary we know that those which are originating from follicular are divided separately and those which are originating from parafollicular, obviously we call them as medullary thyroid cancers, and those which originate from the lymphoid cells are your thyroid lymphomas. So these two we already know about, parafollicular as well as the thyroid lymphomas. Those which originate from the follicular cells are further classified into those which are differentiated and those which are undifferentiated. So differentiated wale kaun kaun se hote hain? We talk about three beta. We talk about your follicular, papillary and your Hürthle cell cancer. Important point, Hürthle cell cancer is now a separate entity. Alright, so these are the three things that you need to know about this. Secondary obviously one, those are metastatic and those arising from the local infiltration. Okay? So this was about the classification of thyroid neoplasms. Which is the most commonly occurring thyroid neoplasm? We need to know it is your papillary carcinoma. Kitne percent beta? 80% of the patients usually have papillary thyroid cancers. Alright, okay. Now coming on to the familial cancer syndromes that are associated with thyroid cancers. There are a lot of questions which are asked on that. Let us revise it in one page. ये एक ही page ऐसा है जो आप पढ़ोगे तो आपके majority questions बन जाएंगे. First, let's talk about your papillary thyroid cancer. What are the syndromes associated with? Number one, we talk about your familial adenomatous polyposis. कौन सा gene है बेटा? We talk about the APC gene on chromosome number 5. The second one we know is your Werner syndrome, not Wermer. Wermer is men 1. Werner syndrome or your adult progeroid syndrome. The gene that we talk about here is WRN gene. The third syndrome that we talk about is Carney complex 1. Carney Prakar 1. So car we need to know. So Prakar 1 alpha is the gene, PRKAR alpha. This is the gene that is important to be known for this syndrome. ये तीन आपके associations हो गए. Other than that, one more you need to remember that is associated with the clear cell variant of papillary, that is your McCune-Albright syndrome. The gene is also important, that is your kinase 1 gene. Coming on next to the follicular thyroid cancer, ये किस साथ associated होता है? It is associated with Cowden syndrome. Gene we already know, it's your P10 gene. Werner syndrome are Carney complex type 1. Genes we have already discussed. Coming on to the medullary thyroid cancer, we know that it is associated with MEN2, MEN2A and MEN2B both, and the gene that we need to know is your RET gene mutations, point mutations of RET gene, that is what is noted here. Okay, beta. Coming on to the next thing are the driver mutations in thyroid cancers. Very, very important topic. A lot of questions have been asked, which is the driver mutation for a particular type of thyroid cancers. We need to know this. Starting first with the papillary thyroid cancer. This is what is most frequently asked. So the most common gene mutation occurring is the one that involves the BRAF gene. So on codon number 600, valine gets replaced by glutamate. So it is called as BRAF V600GE gene mutation, and that is what is most frequently asked. Other than that, there are mutations which are also noted in RET and NTRK1. अब confusion नहीं करना है यहाँ पे. RET मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि केवल medullary thyroid से ही associated होगा. पूछा क्या है कि most common the answer is BRAF V600E, but और कौन से मिल सकते हैं? So RET and NTRK1 can also be found in papillary thyroid cancers. Coming on to the follicular thyroid cancer, the diagnostic one is the upregulation of microRNA 197 and 346. That is what you need to remember. Other than that, P10, RAS and PAX8 PPR A gamma 1 fusion is also noted. इसके अलावा बेटा in the poorly differentiated one or the anaplastic one, the one that you need to remember is beta catenin or CTNNB1. P53 भी मिलता है, but this is what is asked usually. And in medullary we need to remember the RET gene mutations. तो ये सारे आपको driver mutations पता होने चाहिए. एक slide से majority आपके questions solve हो जाएंगे. All right, coming on to the next one, that is your क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया था बेटा, सिंपल क्लासिफिकेशन. कमिंग ऑन टू द TNM क्लासिफिकेशन. अब यूजुअली नहीं पूछा जाता है, क्या पूछेंगे आपसे कि क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए हैं 8th एडिशन ऑफ TNM क्लासिफिकेशन में. तो इन्वेस्टिगेशन चॉइस इज FNAC, दैट वी ऑलरेडी नो. T1 is less than 2 centimeters or equivalent to 2 centimeters. T2 is 2 to 4. T3 is important बेटा. T3 means more than 4 centimeters. अब यहाँ पर आके आपकी
बेंचमार्क या आपका वाटरशेड लाइन आती है। 4 सेंटीमीटर से छोटे जो होते हैं उनको हम लो रिस्क में क्लासिफाई करते हैं, 4 सेंटीमीटर से ऊपर में हम हाई रिस्क बोलना शुरू करते हैं। नाउ T3 इन्वॉल्व्स ऑल विच आर अबव 4 सेंटीमीटर्स। नाउ T3 इज अ न्यू एंटिटी, इसमें T3A और B ऐड हुए हैं। व्हाट इज T3A हियर? T3A स्टेट्स दैट व्हेन इट इज मोर देन 4 सेंटीमीटर्स बट स्टिल लिमिटेड टू थायराइड। T3B states that the size does not matter if there is gross extrathyroidal extension that has happened, but still the extension is limited to the strap muscle. So there is gross extrathyroidal extension only invading the strap muscles. ठीक है, strap muscles को invade किया, उसके beyond अभी नहीं है। strap muscles कौन कौन सी होती है हमको पता है, sternothyroid, sternohyoid, थायरोहायोइड एंड ओमोहायोइड, ये 4 आपकी स्ट्रैप मसल्स हैं जिनको इन्वेड वो कर देता है। व्हाट इज T4? T4 हम बोलते हैं बेटा व्हेन द ग्रॉस एक्स्ट्राथायराइडल एक्सटेंशन हैज गॉन बियॉन्ड द स्ट्रैप मसल्स। ठीक है, तो बियॉन्ड स्ट्रैप मसल्स मतलब क्या क्या इन्वॉल्व कर लिया? T4A वुड बी व्हेन इट हैज गॉन टू द सबक्यूटेनियस सॉफ्ट टिश्यू, इट हैज इन्वॉल्व्ड द लैरिंक्स, द ट्रेकिया, the esophagus and also the recurrent laryngeal nerve. What is T4B? When it has gone to involve the prevertebral fascia or it is encased कौन सा बेटा? The carotid artery and the mediastinal vessels को ये encase कर चुका है, that is your T4B. Now coming on to the end staging, N1 obviously means involvement to or mets to the regional lymph nodes. अब N1A और N1B आपके लिए इंपॉर्टेंट है। N1A मतलब स्प्रेड कैसा होता है थायराइड कैंसर का बेटा? ऐसे स्प्रेड करता है, इट स्प्रेड्स लाइक दिस। तो पहला N1A इज इन्वॉल्विंग द सेंट्रल नोड्स, मतलब लेवल 6 एंड लेवल 7 नोड्स आर इन्वॉल्व्ड, एंड N1B वुड बी मोर नोड, मतलब लैटरल नोड्स 1 2 3 4। सो N1A इज लेवल 6 और 7, यूनिलैटरल और बायलैटरल कौन कौन से? प्रीट्रेकियल, पैराट्रेकियल, प्रीलैरिंजियल और डेल्फियन एंड ऑल्सो योर अपर मीडियास्टिनल नोड्स। N1B would be level 1 2 3 4 or even the retropharyngeal nodes. So this was about the TNM classification that you need to know. अब क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए हैं 8th एडिशन में, एक बार इनको समराइज कर लेते हैं। नंबर 1 इज द एज कट ऑफ। अब ये एज कट ऑफ से क्या मतलब है बेटा? हम बात कर रहे हैं पहले डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर्स की बात कर रहे हैं। Earlier we used to say that when a tumor is limited or isolated to the thyroid gland, if the age of the patient is less than 45, that used to be classified as low risk. But now that low risk criteria has been expanded. Now the age cutoff is 55, not 45. The age आपने बढ़ा दिया है bracket. So we say that the age bracket has been increased from 45 to 55, meaning that if the patient is less than 55 years of age without extension beyond the thyroid, it is now considered as low risk. ठीक है बेटा? All right. Number 2, माइनर एक्स्ट्राथायराइडल एक्सटेंशन, जो टर्म हम पहले यूज करते थे AJCC 7th में था, वो अब हटा दिया। T3 में देयर इज नो टर्म एज माइनर एक्स्ट्राथायराइडल एक्सटेंशन। T3A और T3B हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या होता है। अब 4th पॉइंट क्या है बेटा? कि when you talk about distant metastasis in older patients, when the distant metastasis are happening in a differentiated thyroid cancer, we label them as stage 4B, and when they happen in cases of anaplastic cancer हम उसको बोलते हैं stage 4C. वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे याद रखोगे? डिफरेंशिएटेड है तो stage 4B लोअर स्टेज है, अगर अनडिफरेंशिएटेड है तो stage 4C हो गया। ठीक है, ऑल राइट। और क्या क्या चेंजेस आए हैं? मेजॉरिटी एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर में क्या क्या चेंजेस हैं? पहले क्या होता था, जैसे ही एनाप्लास्टिक हम बोलते थे, द टर्म दैट एनाप्लास्टिक यूज्ड टू मीन दैट इट इज T4, दैट इज व्हाट वी यूज्ड टू अंडरस्टैंड, इट यूज्ड टू बी क्लासिफाइड एज T4, बट नाउ दैट कॉन्सेप्ट हैज बीन रिमूव्ड। व्हाटएवर एनाप्लास्टिक इज देयर अकॉर्डिंग टू दिस द साइज, डिफरेंशिएटेड कैंसर्स को जैसे हम क्लासिफाई करते हैं, एग्जैक्टली लाइक दैट वी क्लासिफाई द एनाप्लास्टिक कैंसर्स एज वेल। Second thing, when there is an intrathyroidal disease, we call it as stage 4A. When there is gross extrathyroidal extension or cervical lymph node mets, we call it as stage 4B, or distant mets को stage 4C बोलते हैं anaplastic में, that we have already discussed. Okay, so this is about the AJCC staging and the changes that has happened. Coming on to the most important carcinoma that is very frequently asked, that's your medullary thyroid cancer. ठीक है, इसमें majority questions आते हैं। कहाँ से originate होता है? Originates from the parafollicular C cells or C cells of the thyroid which arise from the ultimobranchial bodies which arise in turn from the neural crest cells. ठीक है, अब ये located कहाँ होती है? Where are these parafollicular cells located? बेटा superolaterally located होते हैं, so located superolaterally in the thyroid lobe, and that is the place where this cancer most commonly occurs. So this is what we know. Now this MTC can either be sporadic or it can be familial. Most common is your sporadic presentation, that is what we need to know. Majority 75% of the patients will have sporadic MTCs and only 25% will have familial. Familial में कौन कौन से बेटा? Isolated familial MTC associated with MEN2A और MEN2B, 3 तरह के आपके familial presentations हो सकते हैं। जीन कौन सा है? रेड प्रोटॉन को जीन म्यूटेशन we talked about.
Now, what is the differentiation between these sporadic and familial presentations? Sporadic MTC is going to present later into 4th to 6th decade, whereas the familial NTCs, we know familial cancers generally younger patients में present करते हैं, so 2nd to 4th decade for the familial MTCs. और दूसरी पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है बेटा कि द स्पोरेडिक वंस यूजुअली अकर यूनिलैटरली वेराज द familial ones will occur bilaterally and also will be multi-centric. So these are the differences that you need to know between the sporadic और familial. हालांकि ध्यान ये रखना कि ऊपर से देख के आप नहीं पहचान सकते हो. ओके, ऑलराइट. Next thing that we need to know is that which amongst them is the most aggressive. हम familial की बात करते हैं तो meant to be is the most aggressive amongst all. Both sporadic और familial में से meant to be is the those associated with meant to be are the most aggressive variants of MTC. ये बात पूछी जा चुकी है. Coming on to the clinical features बेटा, like other thyroid cancers, neck mass की तरह present होगा, but it can be associated with pain. So usually they are painless, but with MTC the pain can be there. हम differentiated cancers की बात करें, undifferentiated में तो pain आपको मिल ही सकता है, but differentiated cancers में अगर पेन मिल रहा है तो जनरली वी आर डीलिंग विद एन एमटीसी. दैट्स अ हिंट फॉर एमटीसी. ओके, ऑलराइट. नेक्स्ट थिंग, इट कैन बी एसोसिएटेड विद palpable cervical lymphadenopathies in cases of 15-20% of the patients. Because of the local invasion which is present, it tends to invade locally, so you can have pressure symptoms like dysphagia, dysphonia and dyspnea. ये भी आपको characteristically question में वो देगा. Now, this point, next point is what was emphasized in NEET PG 2025 that MTC secretes calcitonin. ये तो this is a universal known fact. हर बच्चा जो prepare कर रहा है उसको पता है. But the thing that they asked was what are the other things it secretes? So you should know that this is a neuroendocrine tumor. तो और भी चीजें secrete करेगा other than calcitonin. What all does it secrete? It also secretes the carcinoembryonic antigen CEA. अब CEA का importance क्या है बेटा? Calcitonin is your diagnostic tumor marker. CEA is important from the point of view of prognosis of MTC. क्यों? The more the CEA, the more it indicates the de-differentiation of MTC. जितना ज़्यादा de-differentiation मतलब it is going towards the primitive aspect, मतलब उतना ज़्यादा ही replicate करेगा, and that is leading to the aggressiveness of the tumor. So the more the CEA, more is the aggressiveness of the tumor. So that is what is important for you to know. Third, it can secrete serotonin. बहुत लंबी लिस्ट है बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं. तो calcitonin हो गया, CEA हो गया, serotonin हो गया. Then we talk about CGRP, calcitonin gene related peptide. We also talk about histaminidases, prostaglandins E2, F2 alpha. We talk about chromogranin. There is synaptophysin. There is TTF1, TTF1. So there are a lot of ones which you need to remember, but mainly remember कि वो neuroendocrine tumor है तो calcitonin के अलावा भी बहुत सारी चीजें secrete करेगा, ACTH भी secrete करेगा. So other than this, because of these secretions which are happening, there are some atypical presentations because of the things that are secreted. जैसे कि because it secretes serotonin, it causes diarrhea. So diarrhea is one of the atypical presentations of MTC. दूसरा, because it secretes ACTH, it can also have Cushing-like presentation that is seen in roughly 2 to 4% of MTC. ठीक है? Histamine secretion की वजह से flushing can also be one of the symptoms or one of the presentations. Now, diagnosis कैसे करते हैं? FNAC we know is investigation. FNAC करोगे तो क्या मिलेगा आपको? Amyloid rich stroma. तो अगर थायराइड में आपको कहीं पर भी amyloid rich stroma मिल रहा है, आंख बंद करके यू हैव टू मार्क द आंसर एज मेडुलरी थायराइड कैंसर. ठीक है, जनरली आपके लेवल पे उसको आपको कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करेगा, बट अगर नहीं दिया है, साथ में न्यूरोएंडोक्राइन मार्कर्स दिए हैं, तो देन ऑल्सो यू हैव टू थिंक अबाउट मेडुलरी थायराइड कैंसर. तो एक तो एमिलॉइड स्ट्रोमा हो गया एफएनएसी पे आप जब देखोगे, दूसरा आपको ट्यूमर मार्कर्स देखने ऑब्वियसली. सो कैल्सिटोनिन इज अ डायग्नोस्टिक ट्यूमर मार्कर एंड प्रोग्नोसिस के लिए हम CEA को हम यूज करते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट इज योर स्लाइड, हिस्टोपैथ स्लाइड. अब बेटा अकेले हिस्टोपैथ स्लाइड से डायग्नोसिस यूजुअली आपसे नहीं पूछेगा, आपको कुछ ना कुछ हिंट्स देगा वो. बट इफ यू आर लुकिंग एट दिस स्लाइड, इट्स एन एमिलॉइड रिच स्ट्रोमा, सो यू विल बी फाइंडिंग, ये आपको पिंक वाला पोर्शन बहुत सारा दिखेगा थायराइड कैंसर की स्लाइड में, एंड दैट इज व्हाट इज जनरली शोइंग योर एमिलॉइड रिच स्ट्रोमा. ठीक है, ओके. कमिंग ऑन टू द स्प्रेड ऑफ MTC lymphatic spread और हेमाटोजेनस स्प्रेड दोनों देखते हैं इसमें. lymphatic spread we usually see in level 6 lymph nodes, hematogenous usually involves the liver. It can also involve the bone and the lung. अब काम की चीज़ क्या है, जनरली हम क्या पढ़ते हैं, thyroid bone mets are usually osteolytic predominantly, but one exception comes here, MTC can show frequently osteoblastic mets. This is very important. Usually बेटा mixed mets मिलेंगे आपको, but if the statement comes that MTC can present frequently as an osteoblastic met, that is also a true statement. It is given in Schwartz. ठीक है, all right. Coming on to the management. अब management कैसे समझते हैं बेटा, आप देखो ध्यान से सुनो.
कोई भी नया पेशेंट आपके पास आया तो तीन चीज़ें एमटीसी के आपको सस्पेक्ट करो तो तीन चीज़ें आपको करवानी क्या क्या करवाना है आपको। नंबर 1, यू हैव टू गो फॉर रेड पॉइंट म्यूटेशंस, यू हैव टू चेक फॉर फियोक्रोमोसाइटोमा, कैसे आपको बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस करनी है। एंड थर्ड, यू हैव टू चेक फॉर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। व्हाई? बिकॉज स्पोरेडिक एमटीसी और फैमिलियल एमटीसी कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपको करवानी ही करवानी है। अब ये आपने करवाया, नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट। अब सर्जरी इज द मैनेजमेंट, कैसे मैनेज करते हैं ध्यान से सुनो। First thing that you need to understand is that this tumor is an aggressive and a multifocal tumor. It's an aggressive tumor. The management also has to be aggressive. We have to stay, the dictum is that we have to stay one step ahead of the tumor. तो tumor अगर गली 1 में है तो हम गली के एक साथ गली नंबर 2 भी कवर कर लेंगे। So basically the understanding is अगर वो central nodes को भी involve कर रहा है तो हम lateral को कर देंगे, नहीं कर रहा केवल thyroid में है तो पड़ोस वाले nodes को भी निकाल देंगे। So we'll stay one step ahead of the tumor. समझते हैं कि what does that mean? Okay, all right. Now हमने क्या बोला था कि at the onset हम नहीं पहचान सकते कि स्पोरेडिक है कि फैमिलियल है। हमने टेस्टिंग करी, टेस्टिंग में हमको मिला कि फियोक्रोमोसाइटोमा है, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन में हमको मिल गया। अब क्या करोगे? Will you directly go for operating on the thyroid gland? Never do that. That is catastrophic because it is going to lead to hypertensive crisis. So the first thing that we do is we operate for pheochromocytoma. So if present, that has to be operated first. प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म इज नॉट एन इशू, वो हम थायरॉइडेक्टमी के साथ में ही उसको मैनेज कर सकते हैं। सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ कमिंग ऑन टू जो मैं आपको बोला था अग्रेसिव है, वन स्टेप अहेड ऑफ द ट्यूमर रहते हैं। तो व्हाट डू वी मीन बाय दैट? इफ इट इज लोकलाइज्ड टू द थायरॉइड ग्लैंड, सो वी टोटल थायरॉइडेक्टमी तो कर रहे हैं, साथ में बायलैटरल सेंट्रल नोड डिसेक्शन, सेंट्रल नेक डिसेक्शन भी कर रहे हैं। सो बायलैटरल सेंट्रल नेक डिसेक्शन प्रोफाइलैक्टिकली। नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा? इफ द थायरॉइड इज इफ द कैंसर इज इन्वॉल्विंग द थायरॉइड ग्लैंड एंड ऑल्सो द लेवल 6, मतलब एक साइड का सेंट्रल कंपार्टमेंट नोड भी इन्वॉल्व है तो थायरॉइड भी हटाएंगे और दोनों साइड के एक इन्वॉल्व करा है तो भी हम दूसरे साइड के भी हटा देंगे। सो थायरॉइड total thyroidectomy plus the central node dissection plus we'll also remove the same side, this side का central node involved है, उस side का modified radical neck dissection भी कर देंगे। So that is staying one step ahead. Then if it is involving the thyroid plus the level 6 lymph node plus other node of one side, तो दोनों side का thyroid total thyroidectomy plus we'll be doing the bilateral central node dissection, central neck dissection plus we'll be doing bilateral MRND। आया समझ में? ओके, सो दिस इज हाउ इट स्टेइंग वन स्टेप अहेड ऑफ द ट्यूमर मीन्स। अब एग्जामिनर आपको यहाँ पर घुमाता है अक्सर कि भाई सब कुछ है, एक्सटेंसिव डिजीज, आपने थायरॉइडेक्टमी कर दी, now will you go for whole body iodine scan or will you be going for radioiodine ablation therapy? There is no role here. Why? It's a parafollicular C cell originating tumor, follicular cells से नहीं हो रहा ना तो iodine uptake नहीं होगा। So there is no role of whole body iodine scan or radioactive iodine uptake here. That is what is extremely important for you to remember. Now the last thing that we need to know is that if it's a locally recurrent or it's a widely metastatic disease, what do you need to do? So tumor debulking तो आप करोगे ही करोगे। You'll also be going for external beam radiotherapy. Two important drug names you need to remember from MTC, that is Vandetanib and Cabozantinib. Both are tyrosine kinase inhibitors that are useful for metastatic MTC approved drugs हैं। लिवर मेट्स अगर होते हैं इसमें ध्यान रखना है बेटा, these are unresectable, they are usually multiple and they are not amenable to both resection as well as ablation, दोनों ही नहीं कर सकते। So this was about the theory part of the MTC that you need to know। दो questions हम जल्दी से solve करते हैं बेटा, let's read these two questions quickly and solve them। Number 1, a 45-year-old man presents with midline neck swelling causing odynophagia and dyspnea। तो दे दिया आपको, प्रेशर सिम्टम्स दे दिया उसने। ये आपका नीट पीजी 25 का क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली पूछा गया है। FNAC or biopsy shows tumor cells with marked variation in size and morphology. Congo red positive amyloid deposits are noted in the stroma. Immunohistochemistry is positive for TTF1, synaptophysin and chromogranin। तो amyloid के साथ उसने neuroendocrine भी दे दिया कि ट्यूमर neuroendocrine है। What is the most likely diagnosis? It is your medullary thyroid cancer. So this was what was asked in NEET PG 2025. Coming on to the next question. A 28-year-old female presented with complaints of neck swelling, difficulty in swallowing and hoarseness of voice। आप देख रहे हो बेटा, जब भी MTC के क्वेश्चंस आएंगे वो आपको प्रेशर सिम्टम्स देगा ही देगा। He'll give you that it's a locally invasive tumor। दूसरा, radiological evaluation revealed a mass compressing the trachea। Biopsy showed cells arranged in nest with amyloid deposits। क्या है, कहाँ से originate करेगा? It is going to originate from the parafollicular cells, right? So this was about the medullary thyroid cancers. All the important points have been covered. Revise well. All the best. Thank you.